Prime Minister Modi on Sunday announced that a new era of development has begun in Assam and that the state is poised to become a major centre for trade and tourism. The Prime Minister visited Golaghat and Darang in Assam, where he laid the foundation stone of and inaugurated multiple projects. He inaugurated a bioethanol plant at Golaghat and laid the foundation stone of a polypropylene unit. The Prime Minister also said that a nationwide demography mission is being launched to stop illegal infiltration. Prime Minister Narendra Modi on Sunday stressed that India is making rapid strides in the field of green energy and renewable power generation. Prime Minister made these remarks after he inaugurated Assam bioethanol plant and laid the foundation stone for polypropylene plant at Numaligarh Refinery Limited at Golaghat in Assam. Prime Minister said that India has embarked on the path of becoming self-reliant in meeting its energy needs. Prime Minister Modi affirmed that BJP-led government's focus is on ensuring that no poor person or region is left behind. बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहां वहां भटकना न पड़े। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को तरसाया गया, ठुकराया गया, क्योंकि कांग्रेस का काम एक वर्ग के तुष्टीकरण से हो जाता था, उनको सत्ता मिल जाती थी। लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर देती है। Earlier in the day, Prime Minister was in Darang, Assam, where he laid the foundation stone and inaugurated development works worth around 6,500 crores. The projects included Darang Medical College and Hospital and GNM School and BSc Nursing College, strengthening medical education and healthcare delivery in the region. The Guwahati Ring Road project that will enhance urban mobility, decongest traffic and improve connectivity in and around the capital city. And the Kuruva-Narengi Bridge over River Brahmaputra, improving connectivity and promoting socio-economic development in the region. Prime Minister announced that starting 9 days from today, on the occasion of Navratri, GST rates will be significantly reduced. आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है, इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी, बीमा कराना सस्ता हो जाएगा और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। Slamming the opposition, Prime Minister stated that for opposition, the interests of its vote bank have always taken precedence over national interest. घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। Describing Assam as a land of patriots, Prime Minister emphasized its significant role in defending the nation from foreign invaders. After his visit to Mizoram, Manipur and Assam, Prime Minister will be in West Bengal and Bihar on September 15th. Bureau Report, DD India.